Assalamu alaikum students. Hope you are all safe and sound at your home. I am your math teacher Misbah Kanwal. Students, today we are going to unit number 6, ratio and proportion. Student, in this video we will do exercise number 6b, question number 5 and 6, and also do the exercise number 6c, question number 1 to 3. So let's start. Look here, the question number 5. The ratio of the brand goods to the in-house goods in a supermarket is 3:5. If they stock 400 kg of ground spice, how much of the stock is there on? It means स्टूडेंट, आपके पास सुपरमार्केट्स में ब्रांड गुड्स और इन हाउस गुड्स की रेशियो दे दी गई है लाइक 3:5. आपके पास स्टॉक जो है 400 kg ऑफ ग्राउंड स्पाइस है और हमने फाइंड क्या करना है, इस स्टॉक में से कितना हिस्सा इन हाउस गुड्स का है. एज यू नो स्टूडेंट, ब्रांडेड गुड्स के लिए कौन सी रेशियो यूज़ हो रही है 3 और इन हाउस गुड्स के लिए कौन सी रेशियो यूज़ हो रही है 5. एंड स्टूडेंट यू नो हमने फाइंड क्या करना है, स्टॉक में से इन हाउस गुड्स का हिस्सा फाइंड करना है. सो इसके लिए हम इन हाउस गुड्स की रेशियो इट्स मीन 5 को यूज़ करेंगे. लुक हियर द सॉल्यूशन. फर्स्टली स्टूडेंट यू राइट रेशियो ऑफ द ब्रांडेड गुड्स टू द इन हाउस गुड्स इक्वल टू 3:5. नाउ यू फाइंड फ्रैक्शन ऑफ देयर ओन गुड्स. सो वी राइट 5/3 + 5 इक्वल टू 5/8. स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास 5 क्या है, इन हाउस गुड्स की रेशियो है एंड 3 + 5 उनकी टोटल रेशियो है. सो यू गेट 5/8. नाउ देयर ओन शेयर इन स्टॉक इक्वल टू 5/8 ऑफ 400 kg. नाउ ऑफ चेंज इनटू द मल्टीप्लाई. Now cut these values. 8 1s are 8 and 8 5s are 40 and 8 0s are 0. It's mean 8 50s are 400. Now remaining values write in next step. 5 multiplied by 50 kg, you will get 250 kg. Now we can say share of in-house stock equal to 250 kg. Now look here, the next question number 6. Given below is a way to test if a person stand in the risk zone of cardiac disease. इट्स मीन स्टूडेंट, ये आपके पास एक वे ऑफ टेस्ट है जिसमें एक पर्सन कार्डिक डिजीज के रिस्क जोन में खड़ा है. फॉर वुमेन हाई रिस्क इज व्हेन वेस्ट रेशियो हिप्स ग्रेटर देन 0.8. फॉर मैन हाई रिस्क इज व्हेन वेस्ट रेशियो हिप्स इज ग्रेटर देन 1.0. इट्स मीन स्टूडेंट, व्यूमेन के लिए हाई रिस्क कब होगा, जब उनकी वेस्ट रेशियो हिप्स ग्रेटर देन होगी 0.8 से, और मैन के लिए हाई रिस्क कब होगा, जब उनकी वेस्ट रेशियो हिप्स ग्रेटर देन होगी 1.0 से. पार्ट ए, विच वंस ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हाई रिस्क ऑफ कार्डियक डिजीज. स्टूडेंट, इस टेबल को आपने यूज़ करते हुए वेस्ट और हिप्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है. लाइक यहाँ पर मिसेस खान, मिस्टर मुजाहिद, मिसेस मोइन एंड मिस शबीर की आपको वेस्ट एंड हिप्स दे दी गई है. आपने इनकी रेशियो फाइंड आउट कर लेनी है और बताना है कि किसकी हाई रिस्क ऑफ कार्डियक डिजीज़ है. ओके. लुक पार्ट बी. गिव एन एग्जांपल ऑफ वेस्ट बाय हिप्स measure which suggest no risk for man but risk for women. इट्स मीन स्टूडेंट्स, आपने ऊपर वाले टेबल को यूज़ करते हुए वेस्ट बाय हिप्स जो रेशो फाइंड आउट करनी है, उसमें से कोई ऐसी एग्जांपल लेनी है जो मैंस के लिए रिस्क ना हो बल्कि वुमेन्स के लिए रिस्क हो. नाउ लुक हियर द सॉल्यूशन. फर्स्टली यू फाइंड द वेस्ट बाय हिप्स ऑफ मिस खान 26:35. स्टूडेंट, you know ratio convert into the fraction form, so we write 26/35. Now here cutting is not possible, so we simply divide and you will get 0.74. Now similarly you find waist by hips of Mr. Mujahid, of Mrs. Moin and Miss Shabir. Like you can see, waist by hips of Mr. Mujahid is equal to 0.87. Next you can see waist by hips of Mrs. Moin equal to 0.93, and last you can see waist by hips of Miss Shabir equal to 0.94. Now student, you find in part A high risk of cardiac disease. So you look, Miss Shabir is high risk of cardiac disease. We write in this form, Miss Shabir has highest waist by hips ratio.
so she has a high risk of cardiac disease. In part B, we write as waist by hips of Mr. Mujahid 0.87 less than 1.0, so he has no risk for cardiac disease. But 0.87 is greater than 0.8, so it is high risk for women. Okay students, before start exercise number 6C, firstly we understand the concept of proportion. So look here, what is a proportion? A proportion is an equality of ratios, like you can see A by B equal C by D. Student, you know fraction form is also represent the ratio form. Look here the next slide. A ratio B equal C ratio D. Now we write as fraction form A by B equal to C by D. In next step student, you can see we apply cross multiply like A multiply by D and C multiply by B. After this we can say AD equal to BC. Hope student you understand these rule. Now we start exercise number 6C. Question number 1. Saima made some tea by putting milk and tea together in ratio 2:9. How much tea can be made by using 1 liter of milk? Now look here the solution. Firstly student, you write given data like ratio of milk to tea 2:9. Total milk 1 liter. Now by cross product rule, milk by tea equal to 2/9. स्टूडेंट यू कैन सी गिवन डाटा में आपके पास टोटल मिल्क कितना है 1 लीटर. सो यू राइट मिल्क 1 लीटर बाय टी इक्वल टू 2/9, यानी आपने मिल्क की जगह 1 लीटर राइट कर देना है. नाउ अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 1 लीटर. इन नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, you multiply 9 multiply by 1, you will get 9. स्टूडेंट्स हमने t को फाइंड आउट करना है. सो आपके पास जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा. स्टूडेंट यू रिमेंबर इट, ये आप रूल पहले से सीख चुके हैं कि एक साइड पे इक्वल के अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो सो दूसरी साइड पे वो जाकर डिवाइड हो जाता है. सो यू राइट इन नेक्स्ट स्टेप t इक्वल टू 9 लीटर बाई 2. Now divide these values, you will get 4.5 liter. So we can say 4.5 liter of tea can be made. Now look here the next question number B. Jamal and Yusuf invested in a business in a ratio 4:5 and shared profit in same ratio. If Jamal made a profit of rupees 24,000, how much profit did Yusuf make? इट्स मीन स्टूडेंट 4:5 के अकॉर्डिंग जमाल और यूसुफ जोन से वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. यानी जमाल की रेशो कितनी है 4 और यूसुफ की रेशो कितनी है 5, और इसी रेशो के अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉफिट भी शेयर करते हैं. और अगर जमाल 24,000 रुपीज़ जोन सा वो प्रॉफिट कमा रहा है, सो यूसुफ कितना प्रॉफिट कमाएगा. लुक हियर द सॉल्यूशन. देयर शेयर रेशियोज इज 4:5. यू कैन रिटर्न इन 4/5. जमाल प्रॉफिट रुपीज़ 24,000. Now you find Yusuf profit by cross product rule. Jamal profit by Yusuf profit equal to 4/5. Now Jamal profit equal to 24,000 and Yusuf profit you find, so you write additive equal to 4/5. Now apply the cross multiply. Yusuf profit multiply by 4 and 24,000 multiply by 5. Now firstly multiply these values, you will get 120,000. Now you can see we find Yusuf profit, so we divide on right side by 4, like 120,000 divided by 4. Now cut these values, 4 ones are 4 and 430,000 times are 120,000. Now Yusuf profit you will get rupees 30,000. Similarly student, we can do question number 3. A good children box has pictures and text in the ratios 15:7. If a book has 35 pages of text, how many pages of picture must it have to be considered as a good children's books? Now we simply solve this question. You can see student, firstly you write the given data like ratio of pictures of text equal to 15:7 and we write 15/7. Now number of the pages of text given
and equal to 35. Number of pages of picture you find by using the cross product rule. Picture by text equal to 15 by 7. Now text is given, so you write 35 in next step. Cross multiply, now you write in next step. Pictures multiply 7 equal to 15 multiply 35. Now we find pictures, so we divide 7 on right side. You can see 7 and 35 cancel out, so 7 ones are 7 and 7 fives are 35. Now remaining values write in next step, like 15 multiplied by 5 equal to 75. So we can say it must have 75 pages of pictures. I hope students you understand these questions. So do practice at your home and also do solve on your notebook. Take yourself. Allah Hafiz.